Hello friends, this is Asuni Sadnarjun Dubedi, Assistant Professor, Law College Dehradun, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे कई टॉपिक देख चुके हैं, कुछ सोशल एस्पेक्ट पे भी हम लोगों ने बात की है। एक बात हम लोगों की हुई है कि अगर हमको तैयारी करनी है तो वो तैयारी कैसे करनी है। ये सभी लेक्चर जो है वो पड़े हुए हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उसको टैप करके देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दैट इज डेलीगेटिव लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड legislation. Now, the most important thing is that what is delegation? When one person transfers his power to another person and to use that power as an agent or representative, then it is called delegation. And delegated legislation means when legislature delegates its power to make the law to the executive. It is called delegated legislation. Friends, we all are aware that the government has three organs, that is legislature, executive and judiciary, or we can say there are three important pillars of the government, that is legislature, executive and judiciary. Nowadays the press is also considered as a fourth pillar of government. According to concept of separation of power, all the powers should be separated among the organs, and no organ is allowed to interfere or encroach in the field of other organ. And we have discussed in the concept of separation of power that legislature has power to make the law, executive has power to execute the law, and judiciary has power to interpret the law. We have discussed earlier that judiciary has power to make the law. Now, what was the need that the law making power of legislature had been transferred to executive? Because whenever the laissez-faire states converted into welfare state, then the responsibility of the state had been increased, because in a laissez-faire state has only duty to protect the citizens of that particular state. But in a welfare state, the state not only has duty to protect the citizens but to provide the all plans and schemes for the welfare of the society. Whenever the state had been converted into welfare state from laissez-faire state, the responsibility of administrative authorities had been increased, so that there was a need that laws should be made by the executive also, because if law is made by the executive, then it will be more beneficial. Further, we will discuss one by one what are the reasons for the growth of delegated legislation. Now, we are going to discuss all the concept in various different modes. For example, we will start the concept of delegated legislation with meaning. What is the meaning of delegated legislation? We have discussed that delegation means whenever a person transfers his power to another person to use that power as an agent or representative, it is called delegation.
And what is delegated legislation? Legislation means a law made by parliament. And delegated legislation means whenever parliament transfers the power to make the law to executive, it is called delegated legislation. And next heading is history of delegated legislation in India. I will use DL for delegated legislation in my lecture. If we want to trace the history of DL, it may be found under Charter Act 1833 and 1935. There were many important case laws in the field of delegated legislation. The most important case on this very topic is Queen versus Vora. In this particular case, Garo Hills Act 1869 was passed by the legislature. Legislature passed an act, that is Garo Hills Act. Garo, Khasi, Jaintia and Naga, these are the hills in eastern India. The act was extended by the governor of Bengal to Jaintia, Naga and Khasi hills by a notification. That particular act was extended by the governor of Bengal in various other places. Now, the person Vora was arrested for a murder and got death sentence for the same. The person Vora was arrested in Khasi Hills for a murder and a death sentence was awarded for the same. He was the resident of Khasi Hills and demanding it ultra vires. Because Vora was of opinion that this law was made for other region and it was extended in Khasi Hills and Jaintia Hills and Naga Hills by the governor, and governor has no power to extend that law. But the court was of opinion that this extension by the governor is valid. So friends, this was a very important case on DL. DL means delegated legislations. The second important case on this very topic is Inri Delhi Laws Act. It is also known as Bible case on delegated legislation because this was the very important case on this very topic. And this was the first landmark case decided by the Supreme Court of India. In this particular act, the states were divided into three types: Part A, Part B and Part C. In this particular judgment, there are many important provisions provided by the Supreme Court. The first one is legislature cannot delegate its essential functions. We are discussing the concept of delegated legislation. We have discussed the concept of separation of power. But in India, we adopt the concept of separation of power with the doctrine of check and balance. It means in India, all the functions of the organs is checked by the other organ. So, delegated legislation is valid. What? Legislature cannot delegate its essential functions. Means legislature cannot allowed to delegate its whole power to make the law to the executive. Second, only ancillary functions can be delegated. Yes, if the legislature cannot allow to delegate its essential power or essential functions, it means only ancillary functions can be delegated by the parliament to
executive. Third one is parliament cannot create a parallel authority. This is very interesting point, friends. Parliament is not allowed to create a parallel authority because the law making power is subsists with parliament. Only ancillary functions can be delegated to executive. Separation of power is not a part of Indian constitution in this very case, because in this case the court validate the concept of delegated legislation. So the court was of opinion that separation of power is not a part of Indian constitution. It means separation of power as pronounced by Montesquieu is not a part of Indian constitution because we adopt the concept of separation of power but some checks and balances, or we can say with some exceptions. The fifth and important point of this very judgment is Indian parliament was never considered as an agent of anybody. Means Indian parliament was not an agent of anybody. Therefore, doctrine of delegates non potest delegate means no delegated powers can be further delegated is not applicable. There was a maxim by which no delegated powers can be further delegated. If a power delegates to some person, then that particular person is not allowed to delegate or transfer that power to another person. But in India, this is not applicable. So, friends, these are some important case law on this very topic. Now, the most important aspect of this topic is constitutionality of delegated legislation. The question arises whether the delegated legislation is valid or not under Indian Constitution. Friends, Indian Constitution provides no provision in which it is observed that Parliament has power to transfer its law making power to executive. Means there is no provision under Indian Constitution in which it has been provided that delegated legislation is valid. What? There is no provision under Indian Constitution which denies that Parliament has no power to transfer its law making power to executive. And the framers of the Constitution, if wants to not allow the delegated legislation, then there will be a particular provision in which it was observed or provided that delegated legislation is invalid. Means there is no provision which allows the DL and there is no provision which denies the DL. But there are some provisions by which we may understand that DL is valid under Indian Constitution. Article 123 of Indian Constitution. Article 123 of Indian Constitution provides the power to the President to proclaim the ordinance. Means President can make the ordinance under Article 123. And President is the head of the executive. And ordinance has the same power as law made by the Parliament. It means under Article 123, the law making power is delegated to executive. Next, Article 13 of Indian Constitution. Article 13 is a very important article provided under Indian Constitution because Article 13 provides that if any law which
before the commencement of Indian Constitution violates the provision of fundamental rights, then that law will be null and void. Article 13 also provides that states shall not make any law which infringes or violates the provision of Constitution, or states shall not make any law which infringes the concept of Part 3 of Indian Constitution, that is fundamental rights. And if state makes such law, that law will be null and void. Article 13.3 provides the definition of law. What is law? Article 13.3 provides that law includes rule, act, bylaw, ordinance, custom, etc. It means the constitution makers were of opinion that there may be a necessity to transfer the law-making power by the parliament to executive. So, under Article 13.3, they use the term ordinance, rule, bylaw. It means delegated legislation is valid. And now Article 312, All India Services. This is also validate the concept of delegated legislation. There are some important case law on the constitutionality of delegated legislation. First case is DS Grewal versus State of Punjab. This case is on Article 312. Sikkim versus Surendra Sharma. Harishankar Wagla versus State of MP, and Kishan Prakash Sharma versus Union of India. All the cases depends on the very concept which we have discussed on the constitutionality of DL. Next important question is reasons for the growth of DL. Now, what was the need to introduce the concept of DL? Because if the law making power had been provided to parliament to make the law, then what was the need to introduce the concept of delegated legislation by which parliament was allowed to transfer its law making power to executive? There are many reasons, and we will discuss the most important reasons for the growth or development of delegated legislation. First one is pressure of time. We all are aware that parliament or the MPs has no more time to do all the works, because they have to do many works. So if the ancillary functions may be delegated to executive, then it is very good that the parliament or the members of the parliament has more time to decide the most important aspect of law. Second, technicality. We all are aware that the members of the parliament are not technical, or we can say if a law is made for the particular technical field, then the expert of that technical field should be involved to make the law. So this is second reason for the growth of DL. Flexibility. If the law is made by the executive, then it will be flexible and it provides the chance to executive to make experiment. So flexibility, experimentation and emergency. During the time of emergency, if the law making power subsists with executive, then it will be more beneficial for the society. Local requirements. The local government or the executive
is in position to understand the local requirements of the persons. For example, if there is any emergency or any need, the district magistrate is in position to solve that problem if he has some power to make the rules. Speediness, we have discussed that if the some power has been provided to executive to make the law, then it will be speedy. And public interest, the all the concept, whether the rule of law, the separation of power, or the DL, is only for the benefit of society, or we can say for the public interest. So friends, these are the reasons for growth of delegated legislation. Now we are going to discuss what functions can be delegated to the executive and what functions cannot be delegated to the executive. We will discuss one by one. First, power to increase the period. If any law has been enacted and enforced in a particular area for a particular period, then that period can be increased by the executive. Means this power to increase the period can be delegated. Power to reduce the period can be delegated. Commencement of a particular statute can be delegated. Skeleton legislation detailed. Skeleton legislation means the parliament is not allowed to transfer its whole power to make the law to the executive. The parliament has to make a parent act in which all the limitations will be provided to the executive to make the rule and regulation, and executive is not allowed to make any rule and regulation beyond that skeleton law. Means parliament will make a parent law. Under that parent law, executive is allowed to make the rule and regulation for the benefit of society. Removal of difficulties like Henry VIII clause. It is a very important subtopic under delegated legislation. Henry VIII clause. Henry VIII clause provide that if the executive feels that the parent act is not allowing to make all the rules and regulations for the benefit of society, then executive has power to amend the provisions of parent act. It is Henry clause, Henry VIII clause. And now this is invalid because the executive is not allowed to amend the provisions provided under parent act or skeleton law. एक्सटेंड एन एक्ट, किसी एक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं. एग्जेम्प्ट एन एक्ट एंड फ्रेमिंग रूल्स. These are some functions which can be delegated to executive, but there are some functions which can't be delegated to executive because the whole power to make the law can't be transferred or delegated to executive. Functions which can't be delegated. First, essential functions. We have discussed that essential functions to make the law can't be delegated to executive. Power to impose tax. The power to impose tax can't be delegated to executive. Future laws can't be delegated. Repeal of law. Repeal of law means executive has no power under delegated legislation to repeal the laws. Parliamentary laws.
constitutional aspect. If there is any question of constitutional aspect, then executive is not allowed to make any rule and regulation in constitutional aspect. And judiciary boundaries of the judiciary can't be decided by the executive. So these are functions which can't be delegated, and these are functions which can be delegated. So friends, this is the concept of delegated legislation. Now I am going to discuss this concept in brief. अगर आपने नहीं समझा है तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ. देखिए, टॉपिक हमको पढ़ना है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान. हम ये जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होता है या डेमोक्रेसी होती है उसके 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. आज की डेट में जो हमारी मीडिया है इसको भी 4th पिलर माना जाने लगा है. अब आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल हुआ, बट कुछ डॉक्ट्रिन एक आई चेक एंड बैलेंस के उसके द्वारा. और जो कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर का, उसने बता दिया था कि जो काम है सबके अलग अलग हैं. लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग का काम करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको इन्फोर्स करने का काम करेगा, और जो जुडिशरी हमारा है वो क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा. अगर अब हम मीनिंग की बात करें कि जो प्रत्यायोजित विधान है या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए, डेलीगेशन का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन अपनी पावर दूसरे को दे देता है कि वो उस पावर को यूज कर सकता है, या तो उसके एजेंट के रूप में या उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो ये डेलीगेशन कहलाता है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जब कभी पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को अगर डेलीगेट कर देती है तो ये क्या कहलाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है. इसके बाद हमने देखा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, कहाँ से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं. तो जो चार्टर हमारा था 1833 का, उसमें इसकी बात है. 1935 का जो हमारा एक्ट है उसमें इसकी बात की गई है. और क्वीन वर्सेस वुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिस पे बात की गई है. क्वीन वर्सेस वुरा में क्या हुआ था कि देखिए, ये जो हमारा 7 सिस्टर्स बोला जाता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये सब, नागालैंड वगैरह जो उधर 7 राज्य हैं, उसमें गारो, खासी, जयंतिया, नागा, पटकई, ये कई पहाड़ियाँ हैं, कई हिल्स हैं. तो गारो हिल्स के लिए एक लॉ बना दिया गया, और उस लॉ को गवर्नर जो था बंगाल का, उसने क्या किया, खासी, जयंतिया, नागा, बाकी हिल्स के लिए भी बढ़ा दिया. अब जो बुरा था, इसको एक मर्डर के केस में पकड़ा गया था और इसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया. बुरा का ये कहना था कि ये जो हम तो रहने वाले हैं खासी के, और लॉ बनाया गया था गारो हिल्स के लिए, तो ये खासी हिल्स पे तो अप्लीकेबल ही नहीं है, और गवर्नर को पावर नहीं है कि वो जो इसको एक्सटेंड कर दे. लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वैलिड है और गवर्नर ये काम कर सकता है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को उन्होंने वैलिड कहा. इसके बाद इंडी दिल्ली लॉज का केस आया, जिसमें आप अगर किसी भी बुक से उसमें पढ़ेंगे तो उसमें 3 एक्ट जो हैं वो और भी डिस्कस किए गए हैं, वो आप बुक से देख सकते हैं. मेन जो कॉन्सेप्ट इसमें था, उन्होंने ये कहा था कि जो रिपीलिंग पावर है वो नहीं होगी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में. इसके बाद अगर हम बात करें कि संवैधानिकता पे, कि क्या संवैधानिक रूप से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वैलिड है या नहीं है, तो इस पर देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वैलिड है या पार्लियामेंट को पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को अपनी लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर सकती है. लेकिन मजे की बात यह है कि ये कहीं मना भी नहीं किया गया है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है. और दूसरा कि जब संविधान बनाया गया, इतना बड़ा संविधान बनाया गया, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये आइडिया होता कि कभी भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है वो कभी भी आगे डेलीगेट नहीं होनी चाहिए, तो वो मना कर देते उसको. इतनी चीज़ें मना की गई हैं, उसको मना कर देते कि ये स्टेट नहीं करेगा. जैसे उन्होंने पार्ट 3 में स्टेट को कई चीज़ों के लिए मना किया है कि स्टेट ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. इसके अलावा जो आर्टिकल 123 है वो पावर देता है, देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की. और आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है. तो अगर एग्जीक्यूटिव के हेड को एक लॉ मेकिंग पावर दी जा रही है, इसका मतलब जो है कि वो डीएल को अलाउ कर रहा है. दूसरी बात, आर्टिकल 13 जो है उसमें जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है, उसमें उन्होंने एक्ट, बाई लॉ,
रूल रेगुलेशन, यहाँ तक कि कस्टम को भी उन्होंने किया है। अब रूल एंड रेगुलेशन तो एग्जीक्यूटिव भी बनाएगा। इससे हमें पता लगता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो वैलिड है। इसका 3-4 हमने केस लॉ दिए हैं आपको जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करते हैं। आप इनके नाम लिख लीजिए और किसी भी बुक से 1-2 चीज़ें पढ़ लीजिए, या इनके केवल केस के नाम देना ही सफिशिएंट है कि ये वैलिडिटी की बात करते हैं। इसके बाद हमने देखा है कि रीजन्स क्या है, इसकी ग्रोथ क्यों हुई है। तो देखिए, एक तो जो पार्लियामेंट है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पहले से उनके पास इतने काम है और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए लॉ अगर वही बनाएंगे तो जो बड़े काम है वो करने के लिए उनके पास टाइम नहीं बचेगा। तो एक तो टाइम का प्रेशर है। दूसरा ये है कि कई लॉज ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई एक बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में लॉ बनाना है, तो अगर उसी का एक्सपर्ट आदमी उस लॉ बनाने में मदद करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, स्पीडी हो जाएगी, लोकल रिक्वायरमेंट्स को समझ सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, इमरजेंसी में वो फ़ायदा कर जाएगा। तो ऐसे कई ये रीजन है जिसकी वजह से ये किया गया है। क्या फंक्शन डेलीगेट किए जा सकते हैं, क्या नहीं किए जा सकते, ये भी हमने देखा है। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वैलिड है, लेकिन द पार्लियामेंट इज नॉट अलाउड टू डेलीगेट इट्स होल पावर टू मेक द लॉ टू एग्जीक्यूटिव। The parliament has to be made a skeleton law or parent law, and under the provision of that parent law, executive will make all the rules and regulation for the welfare of society। यानी कि ये पूरी पावर अपनी नहीं एग्जीक्यूट करते, इन्हें एक पेरेंट एक्ट बनाना होगा, एक ढांचा बनाना होगा और उस ढांचे के अंदर ही ये अपने रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। तो बाकी हमने डिस्कस किया ही है बार बार। और देखिए हमने जैसे कि टोटल कॉन्सेप्ट, चाहे वो सेपरेशन और पावर का हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हमारा डीएल का हो, ये सभी कॉन्सेप्ट जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। क्योंकि जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर से वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गए, वो कल्याणकारी राज्य हो गए और लोगों की भलाई के ज़्यादा स्कीम और प्लान बनाने लगे, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनका रोल भी बढ़ने लगा। और जब रोल बढ़ेगा तो उनको आपको क्या करना होगा, पावर देनी होगी काम करने के लिए। But we have discussed under the concept of separation or power that power corrupts and absolute power corrupts absolutely। अब अगर एब्सोल्यूट पावर किसी को दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, एब्सोल्युटली करप्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हर चीज पे एक चेक होना चाहिए जिससे कि बैलेंस किया जा सके। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इस पे भी 3 तरीके के कंट्रोल हैं जो इस पे चेक करते हैं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल एंड जुडिशियल कंट्रोल। आज हमने डिस्कस किया है डीएल क्या है, इंट्रोडक्शन इसका मीनिंग, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, रीजन क्या है इसकी ग्रोथ के, कौन से फंक्शंस डेलीगेट किए जा सकते हैं और कौन से फंक्शन डेलीगेट नहीं किए जा सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के भी नाम से जाना जाता है, इसको सेकेंडरी लेजिस्लेशन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे तीनों कंट्रोल कि डीएल को कैसे कंट्रोल करना है, और वो तीनों हमारे क्या क्या होंगे, जुडिशियल, पार्लियामेंट्री और प्रोसीजरल कंट्रोल। अब फ्रेंड्स इसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कई लेक्चर जो हैं वो इस चैनल पे अपलोड हैं, और आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका जो लिंक है वो मैंने दिया है और आप उस पर टैप करके आराम से इसको देख सकते हैं। इसको आप पढ़िए और इंतज़ार कीजिए कि दूसरा लेक्चर जल्दी मैं अपलोड करता हूँ जिससे आपका डीएल का ये पूरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर्स समझ में आते हैं और आप ऐसे लेक्चर्स और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी लेक्चर हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।